तीनों एजेंसीज जो ISI है, MI है, IB है, इसकी एनेक्टमेंट के लिए जब ये वजूद में आई तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो बना होगा जिसके तहत ये वजूद में आई हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो रेलेवेंट एनेक्टमेंट्स दिखाइए अगली पेशी पे कि कौन सा लॉ है जो इन एजेंसीज की क्रिएशन को डील करता है। उसके बाद इन एजेंसीज की जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और इनका काम क्या था। और तीसरी बात, विद रेफरेंस टू दी रेलेवेंट एनेक्टमेंट, ये बताइए कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई ऑफिसर बियॉन्ड अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है जुरिसडिक्शन या किसी भी अदारे को अप्रोच करता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और एनी अदर प्रिटेक्स्ट, तो क्या एनेक्टमेंट के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उस अफसर के खिलाफ? ये पॉइंट भी यहाँ रखे सामने। एक मैं ऐड कर दूं इसमें, ये भी देखना कि क्या वो शख्स जो आता है वो उस इदारे का एक प्लान है, प्रोग्राम है, या उसका इंडिविजुअल का है, ये भी तो देखना है ना। ये जरा अटॉर्नी जनरल इससे रिलेटेड आप ये बताइए, आपने लास्ट हियरिंग में कहा था कि 2016 और 2017 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। Who was in government? Who was in government? My lord, 2017 में it was PMLN which was in power. 2018 onwards the PTI थी. एक सेकेंड. So the government was helpless? That is the reality. Yes. ये जरा आप Are you also helpless today? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. My lord, आप ये जरा पढ़ दें, ये जो धरना जजमेंट के बाद वाला ऑर्डर हुआ है जी, इसमें जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है, मैंने कहा, मैं बार बार यही कहता हूँ, सच in this case, ये ऑर्डर तारीख बता दें क्या ऑर्डर है? This order is dated 15th November 2023. I'd read out from paragraph 5 onwards. In this case, review petitions and applications were filed in early 2019, but were not fixed for several years. In the interim, the other signatory to the judgment, namely Mushir Alam J, retired on 17 August 2021. The concerned officers of the Supreme Court were asked to submit a report regarding non-fixation of these matters in court. The additional registrar, fixture, and the additional registrar judicial have jointly reported as under. It is pertinent to mention here that usually the review petitions are fixed on priority before the same bench, or in which at least the Honorable Author Judge is a member. Furthermore, previously important cases used to be fixed before the Honorable Court after approval of Honorable HCJs. Record shows that CRP 266/2019 etc. were added in draft of final cause list number 17 of 2019 for the first time on 25/4/2019 at 1:12 p.m. CFMS report is attached at flag A. However, the same were removed from the draft list on 25/4/2019 at 5:06 p.m. as per direction given by the then Honorable Chief Justice. And further that, it is also worth mentioning that the said cases were also repeatedly mentioned in list of important cases presented to former Honorable Chief Justices from time to time. However, these cases remained pending in office due to the reason that there were no direction from the then Honorable Chief Justices for fixation of the case. Next para 6. With humility and setting an example for others to follow, this court acknowledges the manipulation resorted to in the Supreme Court by not fixing the said petitions and applications. The Supreme Court endeavors to regain the confidence of the people by acknowledging this and will be demonstrating that the mistakes of the past will not be repeated. Truth sets one free and makes institutions strong. The people of Pakistan deserve nothing less. 7. It is long overdue that every institution acts transparently and responsibly, and when wrong is done, it is incumbent to acknowledge it. Ignoring ये अब आप लोग भी कर लें, हमने तो करके दिखा दिया आपको, सिर्फ बातें नहीं हैं। भाई अगर आप लोग तो दूसरे एक्सट्रीम पर चले जाते ना, इसको सजा दो, उसको सजा दो, फिर कम से कम इकरार ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। हमने तो इकरार कर लिया ना, आपको दिखाया, अब आप भी कुछ करके दिखाएं। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज है,